from 60 million to 924 million. OFC fiber connectivity, which was 11 lakh route kilometers in 2014, today stands at 41 lakh route kilometers. So an addition of 30 lakh route kilometers. The BharatNet program is the world's largest rural broadband connectivity program, costing over $17 billion, connecting all 240,000 gram panchayats across our country. And so while you have seen this huge capital expenditure, this huge infrastructure formation in our country, on the other hand, you have seen costs drop exponentially. एक तरफ जहां अधोसंरचना बना है हमारे देश में, वहीं दूसरे तरफ दाम ऐतिहासिक तरीके से गिरे हैं. A telephone call used to cost 50 paise 10 years ago. It today costs 3 paise. Internet connectivity of 1 GB used to cost 289 rupees. It today costs 8.9 rupees. There's been a 96% drop, as you've seen a huge increase, exponential increase in connectivity. And therefore it is apt that on this day the Prime Minister has unveiled, on the one hand, the World Telecom Standardization Assembly's meeting in New Delhi, and on the other hand, seen the 8th edition of the Indian Mobile Congress. Now, what does this mean for us? Two events, both landmark events. One international, the other the largest digital conference in Asia, the IMC. Both events together represents a cohesion, a union between those that provide the equipment, provide the service, provide the bandwidth, provide the carriageway, and those that set the standards and the regulations for telecommunications across the world. This is the first time as the WTSA and the ITU is moving forward and setting standards for 6G. The goal is to set standards by 2030. This is the first time in the history of our country, पहले बार इतिहास में, भारत उस स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रक्रिया में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है. इसके पहले भारत कमरे से बाहर बैठता था और केवल एक स्पेक्टेटर, एक दर्शक के रूप में स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रक्रिया को देखता था. 5G के रोल आउट के बाद जहां देश में सबसे जल्द, फास्टेस्ट रोल आउट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे जल्द 5G की रोल आउट अगर किसी देश में हुई है तो आपके और हमारे भारत में हुई है, जहां 21 महीने में 4.5 लाख BTS लग चुके हैं. 21 महीने में 98% जिले कवर हो चुके हैं. 21 महीने में 80% आबादी कवर हो चुकी है 5G से. और उस वातावरण में पिछले वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री जी ने भारत का 6G विजन को रिलीज किया था.
और उसी समय भारत 6G अलायंस B6GA, भारत 6G अलायंस को जन्म दिया था, जिस संगठन में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिस संगठन में सरकार के ऑफिसर्स हैं, जिस संगठन में शिक्षा के संस्थाओं के प्रोफेसर्स हैं, IITs के, जिस संगठन में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिस संगठन में हर एक स्टेक होल्डर का प्रतिनिधित्व है, 7 वर्किंग ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं और इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन के आधार पर भारत ने अपना मार्क ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोटोकॉल में छोड़ दिया है। भारत ने 5I का प्रस्ताव WTSA में रखा, उसे स्वीकृत किया गया। और भारत 5I की क्या सोच थी? वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की विचारधारा कि रूरल कनेक्टिविटी भी इसका भाग होना चाहिए, उसे स्वीकृत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ने किया और वो 6G के स्टैंडर्ड्स में अब सम्मिलित हो चुका है। ये बहुत बड़ी जीत भारत 6G अलायंस की हुई और भारत 6G अलायंस ने यह संकल्प बनाया है कि जब भारत 6G के स्टैंडर्ड्स मनोनीत होंगे ITU के द्वारा, WTSA के द्वारा, उसमें 10% पैटेंट्स का योगदान भारत से होगा। 10,000 हमारे रिसर्च की कंट्रीब्यूशन होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हमारा B6GA रात और दिन और रात संगठन हमारा कार्य कर रहा है और इस 10 दिवसीय सम्मेलन में भी हम अपने तरफ से कई प्रस्ताव रखने वाले हैं। आज भारत की आवाज ग्लोबल साउथ की आवाज हो गई। भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में गूंज रही है। भारत की आविष्कार, चाहे वो डिजिटल सॉल्यूशंस हो, UPI हो, आधार हो, 4G स्टैक हो, विश्व भर में इसकी स्वीकारता हो चुकी है। भूटान और सिंगापुर से हमारी UPI की एग्रीमेंट हो चुकी है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी हो रहे हैं और एक माह में मैं आपको उदाहरण दे दूं, डिजिटल पेमेंट्स के आधार पर, UPI के आधार पर $275 बिलियन की पेमेंट हुई है और करीब करीब 15,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस टोटल हो चुके हैं। और उसी तरह आज पूरे विश्व में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी 46% भारत में से निकलती। आज ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर और भारत को आगे बढ़ाने के आधार पर। हमारी कोशिश है कि इस WTSA की संस्था और इस कॉन्फ्रेंस के आधार पर भारत का जो इनोवेशन है, हमारा 5G जो टेस्ट यूज केसेस हैं, उनकी स्वीकारता हो। हमारे जितने टेस्ट लैब्स हमने बनाए हैं 6 टेराहर्ट्ज के, हमारे एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेस्ट बेड के IIT मद्रास में, उसका प्रदर्शन हो और उसी के साथ हमारा जो संकल्प है हमारे मंत्रालय का, समावेशित, विकसित, त्वरित और सुरक्षित, इन चारों स्तंभों का समावेश ITU के WTSA में भी हो। भारत का योगदान अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम पॉलिसी बनाने में
हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि आज जो विश्व का स्पॉटलाइट भारत पे आ चुका है, इस कॉन्फ्रेंस में 36 देशों के मंत्री आए। इस कॉन्फ्रेंस में 3,200 डेलीगेट्स आए हैं 160 देशों में से, जो ITU और WTSA के इतिहास में कभी नहीं हो पाया है। तो एक नया इतिहास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कॉन्फ्रेंस से भारत रचेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और आने वाले दिनों में जो कैरेजवे बना है, जो रेगुलेशंस भारत बनाएगी, अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशंस में अपना योगदान देगी, उसके आधार पर जो नई रेवोल्यूशन, क्रांति आने वाली है, AI की, मशीन लर्निंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, डेटा सेंटर्स की, उसका केंद्रीकरण भारत में होगा। इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूरसंचार मंत्रालय संकल्पबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से लगा है। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके प्रश्न हो उनका उत्तर देने के लिए हम लोग इच्छुक रहेंगे। धन्यवाद सर। Now I start asking number 15. ये जरा माइक please provide mic. Good evening. How are you? Can you, all of you, before you ask your question, if you can just take your name and who you represent, that will be helpful in future recognition between us as well. I agree, sir. Ashwin Kumar, I work for the news channel CNBC TV 18. Ashwin Kumar, sir. Sir, I just want to borrow some cues that fell from the inaugural session in terms of taking this journey forward, digital India forward. One of the suggestions that fell from Mr. Ambani was that on the way forward, we need more assistance for AI adoption in the form of perhaps incentives for data centers. He alluded to that. Is that something that the government is open to considering? India has to and will emerge as an international leader in the area of telecommunications. As you're aware, we have taken many steps under the visionary leadership of the Prime Minister. The PLI scheme for telecom, wherein in the last 2 years we've had over 3,500 crores worth of investment. Almost close to 55,000 crores worth of production. Total of 42 companies that have participated. 11,550 crores worth of exports. Over 18,000 direct jobs being created. That has spurred our telecom equipment sector structurally. We are now looking at incentivizing design-led manufacturing. Because what's very important, Ashwin or Ashwini? Ashwin. So what's very important, Ashwin, is that we vertically integrate. So not only manufacturing, but we want to promote design-led manufacturing. And so we are looking at incentive structures for design-led manufacturing. With the Prime Minister's resolve, we are now backward integrating all the way back to fabs.
You and I used to dream about the concept of setting up a semiconductor fab in India. Today that's become a reality. Not one, not two, but multiple fabs being set up. One in Assam with the Tatas, almost over 40,000 crores. Others in other parts of the country. On the Prime Minister's most recent trip to the United States, a landmark achievement which needs to be spread far and wide within India, and I'd like your help in doing that. For the first time, India and the US together will manufacture chips in India to be used by the US Defense Services. And this has not been given to any other country in the world. So that kind of cooperation. So whether it is manufacturing, whether it is fabs, whether it is data centers, we will move very swiftly. Directly this comes under MeitY, but at the same time, we realize that the next big opportunity in India, please understand, you've set up the carriageway, you've set up the infrastructure. We also need to do two things. We've gone backward integrating into semiconductor chips. We need to do two things. We need to move from a services nation to a product nation. And for that, setting up ecosystems of OEMs, just like in the case of auto, or in the case of my former ministry, civil aviation. Airbus setting up its final assembly line in Vadodara for the C-295 aircraft or the Aquarial helicopter. Brings in it, with it, many ancillaries. So like that, we need to set up OEMs for telecom equipment manufacturing in India. On the other end of the spectrum, once the carriageway has been set up, the back end and the vertical integration has been done, we also need to create the stack. And the next big opportunity will be in India, like the opportunity in the 90s was in software, will now be in AI, will be in IoT, will be in ML. And that's where we have the human talent to be able to capitalize on that to make India a leader in that sector. We are running a separate program for telecom specific chips as well, but certainly we shall look at the whole gamut of the ecosystem. 13. After that, I'd like to move to the left side. Huh? Yeah, who else is there after this? So I can, 29? 9. 29, 37 and 9. Mike. मैं संतोष साहब को नंबर निश्चित से सर मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ दो नहीं एक पूछना so one question is all the major telcos are there अभी सर जो भी रिचार्ज हो रहे हैं पोस्टपेड में और प्रीपेड में they are going high day by day तो क्या आपके इनसे बातचीत हो रही है क्योंकि जो गांव देहात के लोग हैं आपने बोला एफोर्डेबिलिटी की बात so prices are going up और उसकी वजह से गांव देहात में यूजर भी कम हो रहा है और लोग मतलब सवाल भी कर रहे हैं कि सरकार बाकी सब जगह दाम कम हो रहा है लेकिन टेलीकॉम सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं। तो संतोष जी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आपने शायद मेरे वक्तव्य को ध्यान से नहीं सुना, तो आपके सहूलियत के लिए मैं उसे दोहराना चाहूंगा। पिछले 10 सालों में जहां टेलीकॉम का नेटवर्क 1400% बढ़ोतरी हुई, चाहे आप ब्रॉडबैंड की आप बात करो, चाहे आप इंटरनेट की बात करो, चाहे आप मोबाइल्स की बात करो, वो डेटा में रिपीट नहीं करने वाला, चाहे आप OFC फाइबर की आप बात करो, वही दाम टेलीकम्युनिकेशंस 95% गिरी है। एज 1 GB डेटा आपके लिए 10 साल पहले उसे दोहराना 89 रुपीज होता था, आज पिछले 10 सालों में जहां टेलीकॉम का नेटवर्क 1 मिनट वॉइस कॉल का 51 पैसे होता था, 1400% आज 3 पैसे बढ़ोतरी हुई। और निवेश ब्रॉडबैंड की आप बात करो, चाहे आप इंटरनेट की बात करो, चाहे आप
4G मोबाइल से की बात 5G करूं, जाने में डेटा में रिपीट नहीं करने वाला। करीब करीब 2 वर्षों में चाहे आप 4,26,000 फाइबर करोड़ की आप बात करो, का निवेश वही देश दाम में टेलीकॉम सेक्टर में कम्युनिकेशंस 95% गिरी हुई है दामों में। 1 तो GB आप डेटा 10% पहले दामों में दोहराना मतलब क्या? 9 रुपीज होता था कि जो 3 आज पैसे इस- होता था वो अब 3.3 पैसे हो चुका है। और क्या था ये दाम? ये 51 पैसे था। तो जहां निवेश किया जाता है उस निवेश का रिटर्न भी आना जरूरी है, नहीं तो 4G से 5G, 5G से 6G हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप विश्व में देखिए, अगर एक आप पैकेज ले लो 2 GB का, 70 SMS का, और एक और पैरामीटर है, 3 पैरामीटर्स का एक पैकेज आप ले लो, भारत में उसका कॉस्ट करीब करीब $1.4 है। और विश्व के विकसित देश भूल जाओ, हमारे पड़ोसी देश देख लो, चाहे इंडोनेशिया देख लो, चाहे मलेशिया देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, आसपास के देश चीन देख लो, $12 और विकसित देश $29। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आर्ग्यूमेंट भारत में बनी है और आज विश्व से सबसे सस्ता मेरा और आपका भारत है टेलीकॉम की सुविधाएं देने के लिए। और वहीं डेटा का अब्जॉर्प्शन, जहां आप और हम 10 साल पहले 1.7 GBS हम लोग कंज्यूम करते थे, 1.3 GBS मोबाइल डाउनलोड स्पीड, आज वो 96 Mbps हो गया फ्रॉम 1.3 Mbps। That means almost 80 times. And on fixed broadband, what used to be 1.7 Mbps has now become 64 Mbps. That's 60 times. So when you have seen exponential growth and the cheapest tariffs today in the world, then India has become a service and a product nation. Yes, ma'am. 29. Yes. Okay. Now why don't we give it to the lady there? Yeah. See, 29. Good evening, sir. This is Aditi Agrawal from Hindustan Times. In your opening remarks, you talked about how India wants to give several proposals to WTSA. What kind of proposals are these? And you also talked about seeking approval for certain 5G test cases. So which are these 5G test cases? And the second thing is about... No. So hold on there. Let me address that. So let me explain to you the process of standard setting. The process of standard setting is when all of us sitting in this room are stakeholders in setting the standard, and there are two bodies, 3GPP and WTSA. And in those two bodies, Aditi will give a proposal, Ashwin will give a proposal, Santosh will give a proposal. All those proposals will be examined by this body. They will be subject to tremendous amount of scrutiny at the highest level, on technical basis, on economic basis. And only those proposals that pass the test and pass the muster will be accepted as part of the standardization rules that will be set. We have crossed that hurdle for the first time in our country's history, when in 5GI, which was our proposal, that accessibility must extend to rural areas as well, was accepted by the WTSA and 3GPP. 1. 2, our test use cases are not something that have to be
licensed, accepted, vetted by these bodies. Our test use cases are some things that we will voluntarily contribute, that these are the 5G test cases we're doing in India. For example, we've chosen those 10 5G intelligent villages across India, where we will apply, because what is 5G? 5G is just the pipe. It's broader, so you can push much more traffic on that carriageway. There is very low latency. Therefore, you can